निर्मला सीतारमन जी लगातार छठी बार देश का बजट प्रस्तुत करेंगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और जब भी बजट आता है तो हर घर परिवार यही सोचता है कि इसका असर मेरे घर परिवार के बजट पर क्या पड़ेगा। तो आइए बजट एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत करते हैं। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। हमारे साथ हैं शंकर मिश्रा जी, नमस्कार। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथ ही स्वागत कीजिए प्रोफेसर हेमेंद्र कुमार डांगी का, नमस्कार। आप एक अर्थशास्त्री हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो शंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का वर्ष है और इसलिए इसे वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट कहा जाता है, तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इंटरिम बजट और फिर जो आम बजट आता है, सालाना जो बजट आता है, दोनों में क्या अंतर है? इंटरिम बजट जिस साल सरकार इलेक्शन में जाती है उस साल इंटरिम बजट ही लाती है और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर लोकसभा की जब गठन हो जाएगी तो फिर वो फाइनल बजट ना जैसे लाती है वैसे। फ़र्क दोनों में ये क्या है कि इंटरिम बजट जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो उसके अंदर कोई पॉलिसी मेकर नहीं होगा, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट की कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होगा ताकि जो पब्लिक पे इन्फ्लुएंस करे, ताकि उससे जो इलेक्शन प्रभावित ना हो। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि बजट सत्र बीते कल 31 जनवरी से शुरू हुआ, जब प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को एड्रेस किया और उसके बाद जो एक परंपरा है कि बजट की पूर्व संध्या पर एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है, कल जो सामने आया वो इंडियन इकोनॉमी का एक रिव्यू था, 74 पन्ने का दस्तावेज। क्या विशेष बातें थी उसमें? जी, तो जैसा अभी आपने बात बताई कि चूँकि पूर्व ये इलेक्शन से पहले का बजट है तो इसलिए गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड बजट नहीं दे पाती है। और इसी तरह से जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है वो सर्वे ना आके एक रिव्यू रिपोर्ट आई है, वो भी एक तरह से शॉर्ट सिनॉप्सिस है। रिव्यू रिपोर्ट जो है वो आपका सर्वेक्षण का ही एक पार्ट है। और जो हमें समझ में आया इस रिव्यू में जो सामने निकल के आई कुछ बातें, इसमें दो पार्ट में इस रिव्यू रिपोर्ट को इसको लिखा गया है। एक पार्ट में मेनली ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद से अब तक की जो सिचुएशन है, इंडियन इकोनॉमी कैसी रही वो, और आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी और फोकस है उसके बारे में इसमें बात की गई है। और इसमें ये पूरा बताया गया कि कैसे कॉलोनियल टाइम से पहले, मतलब ब्रिटिश टाइम से पहले हमारा इकोनॉमी में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन था और कॉलोनियल पीरियड के बाद वो कंट्रीब्यूशन जो योगदान था हमारा वो कम रह गया, और फिर कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक यात्रा कैसी रही उसके बारे में बताया गया। जैसे बजट तो आगामी वित्त वर्ष के लिए है, 24-25 के लिए, और सर्वेक्षण या सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष, तो इस वर्ष किस तरह की प्रगति रही अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें? जी, तो जैसा कि पिछले बजट में आपने देखा होगा कि प्रिडिक्शन था या अनुमान था कि हम 7% से ग्रो करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लगभग 7% से ग्रो करें। और अभी जो वापस से अनुमान है वो 7% का है। अगर ऐसा ही चलता रहा जो कि अनुमान है, तो जो एक आप जगह जगह ये कैची लाइन सुनते होंगे, गांव हर जगह आजकल एक नारा चल रहा है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अनुमान है उस हिसाब से अगले 2-3 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। और विश्व की 5 मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का भी हम हिस्सा हैं और हो सकता है उसमें और प्रोग्रेस करें। जी बिल्कुल। तो भारत ने संकल्प लिया है कि अगले 3 सालों में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, और अगर इस अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनना है तो हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, देश की राजधानी दिल्ली से तो ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, लेकिन देश की कमर्शियल कैपिटल चलते हैं मुंबई, जहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शरद। डॉक्टर शरद, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए, आज आम बजट पेश होना है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरपर्सन हैं आईआईटी मुंबई के, तो इंडस्ट्रीज की क्या अपेक्षा है आज बजट से? जैसे कि कहा गया है अभी कि ये अंतरिम बजट है, इसमें कोई बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की दृष्टि से हमें चाहिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजट के अंदर प्रावधान किया गया है वो बहुत कम है। मेरे को लगता है उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। कुछ अर्जेंट बातें हैं, जैसे पॉलिटिक्स चल रही है और जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, उसके अंतर्गत अभी इकोनॉमी बहुत डाउन है यूरोप की और कुछ हद तक अमेरिका की भी, और ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कम हो रहा है। तो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे निर्यातकों को कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है।
तो एक तो पहले प्रावधान था 35 2AB, तो जिसके अंदर वेटेड डिडक्शन दिया जाता था, तो कुछ कैलिब्रेट करके उस प्रावधान को वापस लाना चाहिए। दूसरी एक अहम रिक्वायरमेंट अभी जो है बहुत ही जरूरी, वो ये है कि आत्मनिर्भरता, भारत की आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हमें हमारी एक फ्रेट लाइन होनी बहुत जरूरी है। हमारे पास में बल्क कार्गो लाइन तो SCI है, लेकिन कंटेनर शिप कोई नहीं है। और ये बात मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से 2 साल से कहते आया हूं कि कोई भी हिसाब से हमें कंटेनर लाइन हमारी इंडिया की होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए बजट में शिपिंग लाइंस के लिए थोड़ा सा प्रावधान होना चाहिए। तो और इसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सफर कर रही है, लोकली भी और निर्यात में भी, तो उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूं कि बजट में कम से कम ये जो अहम चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जी डॉक्टर शरद, शुक्रिया आपके इनिशियल विचारों के लिए। पर अगर हम जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसका बजट देखें तो पिछले साल 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर, 27 लाख करोड़ का राजस्व, कैसी प्रगति रही इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन अच्छा रहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। सिर्फ जनवरी में GST का कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ है, तो ये बहुत अच्छा, ये सेकंड हाईएस्ट GST रेजिम का है ये। जी, तो बिल्कुल ये चार्ट आप देख सकते हैं। और इसमें अंतिम महीना जनवरी का जो कल ही संपन्न हुआ है उसमें देखिए कि मासिक कलेक्शंस GST जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा। प्रोफेसर साहब, लगातार हर महीने GST का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी रही इस साल। जी, और जैसा कि आपने बताया है कि गवर्नमेंट के पास एक बजट का मेन तात्पर्य क्या है? बजट का मेन तात्पर्य है कि अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं तो मैं अपने खर्चे और आय के बारे में एक लेखा ब्यौरा बनाता हूँ। कोई फॉर्मल तरीके से बनाता है, कोई इनफॉर्मल तरीके से बनाता है, राइट। अगर मैं एक सर्विस क्लास हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरी इनकम क्या क्या हो सकती है और मेरे एक्सपेंडिचर क्या क्या है, मेरे खर्चे क्या है और मेरी आमदनी क्या है। गवर्नमेंट भी एक तरह से, गवर्नमेंट का कोई ऐसी फिक्स सैलरी इनकम तो है नहीं, तो गवर्नमेंट भी एक एंटरप्राइज की तरह अपने कुछ आय के स्रोत डिसाइड करती है और कुछ खर्चे देखती है। उन आय के स्रोतों में जैसे आपने बोला कि एक तो आपका प्रत्यक्ष रूप से जो कर है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो मेरे कितनी बार सैलरी पे पहले ही कट के आ जाता है, जो मैं कमा रहा हूं वो, और जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर आप देखा जाए तो टोटल अगर गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती है तो 85 रुपए हमारे टैक्सेस के थ्रू आते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान जो है आपका GST का है। जी बिल्कुल, तो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में ही अब तक 9 महीनों में टैक्स बॉयंसी देखी गई है। तो टैक्स पेयर्स को हम बधाई देते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप योगदान दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम जरूर जानेंगे, क्योंकि 2024 नववर्ष में हम देख रहे हैं इनोवेशन पे बहुत बल है। तो अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो आखिरकार आज अंतरिम बजट से उनकी क्या अपेक्षा है? ब्रेक के बाद। Special housing loan scheme for women. Rate of interest at 8.35%. Zero processing charges, no prepayment charges. Takeover of loans at zero cost. Now is the right time to be a woman home buyer. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC।
महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। प्रस्तुत होगा संसद पर और दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं प्री बजट, हमारा ये विशेष कार्यक्रम जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार आम बजट से हम लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। और कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय भारद्वाज जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप फाउंडर हैं एक स्टार्टअप के जो कि मेंटल हेल्थ स्पेस में है और जहां पे एक टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है। तो ये बताइए, स्टार्टअप पे हमने देखा है गत वर्षों पे बहुत बल दिया गया है, स्टार्टअप्स की क्या अपेक्षा है आज अंतरिम बजट से? देखिए, इस समय एक लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हिंदुस्तान में और एमएसएमई हैं, और स्टार्टअप्स जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है थोड़े से फंड्स जो है स्टार्टअप्स के लिए और एलोकेट करे। जो स्टार्टअप फेज में है, उसके एंजल फेज में है, उसके बाद वो वीसी फेज पे लेके जाएं और उसको मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करें। और कुछ ऐसी they have to create such terms and condition और ऐसी फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और मशीन लर्निंग हो गया और रोबोटिक्स हो गया, इस तरह के स्टार्टअप्स को और बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल, यानी स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए आज देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या सामने निकल के आता है। डॉक्टर शरद सराफ हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद से हम ज़रूर और पूछेंगे बातचीत, लेकिन अगर हम टैक्सेशन की बात करें खासतौर पे स्टार्टअप्स के लिए, तो टैक्स के किस तरह के इंसेंटिव्स हैं? जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसके अंदर तो है, लेकिन ओवरऑल जो स्टार्टअप पर कोई स्पेसिफिक जोन के अंदर कोई स्टार्टअप लगा है तो वहाँ पर सरकार बेनिफिट दे रही है। ओके जी। और पर्सनल टैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई दिलचस्पी लेता है, खासतौर पे मिडिल क्लास, नौकरी पेशा। और हमने देखा कि गत वर्षों में ओल्ड रेजीम टैक्सेशन के साथ साथ न्यू रेजीम भी आई जहां पर नए स्लैब रेट थे लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलती थी। तो न्यू रेजीम को आज क्या वित्त मंत्री और अट्रैक्टिव बना सकती हैं? बना सकते हैं। अभी जो टैक्स के 5 स्लैब हैं न्यू रेजिम में, जिसमें 5% है, 10% है, 15% है, 20% है। टैक्स इनकम जैसे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 10% है, 9 से 12 15% है और 15 से ऊपर 30% है। ये 20 और 30 के बीच में जो गैप है, काफ़ी गैप है। काफ़ी गैप है। उसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक स्लैब 25% का और जाने, यानी आप कह रहे हो 15 से 20 के बीच में 25% का एक स्लैब आ जाए तो रियायत मिल जाएगी। और जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, इस समय वो 50,000 है, क्या वहां पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं? 1 लाख तो होना ही चाहिए। 50,000 तो बहुत कम अमाउंट है और बहुत दिनों से ही चल रहा था। हालांकि बीच में बंद कर दिया था, लेकिन स्टार्ट किया तो 50,000 तो कम है। एक्सपेक्टेशन पब्लिक की रहेगी, सैलरी क्लास को तो बिल्कुल रहेगी, तो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है टैक्स का। जी बिल्कुल। आइए अलग अलग सेक्टर्स की भी अगर बात करें कि आखिरकार आज बजट कौन से सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकता है। अब शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और आप तो शिक्षाविद हैं, 2 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमारी विश लिस्ट क्या है? आपने बड़ा सही कहा है कि शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी अर्थव्यवस्था के पिलर हैं। और बहुत सारी मतलब थियरीज है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट को इन 2 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा वो करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि बाकी फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो सके। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहूँगा कि पिछले बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं को काफ़ी हद तक हमने धरातल पे उतरते हुए देखा। जैसे कि पिछले बजट में या जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर था और उसको हमने काफ़ी हद तक धरातल पे उतरते हुए देखा है, तो उससे हम एज ए शिक्षाविद हमें अच्छा लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक चेंज आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये और गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार करें और भारत के हर कोने तक इसका जो है अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। रिसर्च फाउंडेशन को लेके गवर्नमेंट ने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था, वो भी बहुत ही अप्रिशिएटिंग था। हम चाहते हैं कि इसका एक इकोसिस्टम बनाया जाए
और क्योंकि भारत अब जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, विकसित भारत की अगर परिकल्पना कर रहे हैं और डेवलप नेशन की तरह हम अपने आप को देख रहे हैं, तो उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है और उसमें भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हमारी उम्मीदें एज ए शिक्षाविद ये है कि कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट की तरफ से आए जिससे रिसर्च पे और फोकस हो। और एक फोकस एरिया गत वर्षों में हमेशा बजट में रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब जब बजट आता है तो हमने देखा है कि रेलवे बजट भी इसके साथ मर्ज हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की, इस दिशा में आज क्या हो सकता है? आज होटल इंडस्ट्री की को ज़्यादा उम्मीद है कि शायद हमें होटल इंडस्ट्री वाले को भी इंक्लूड करें इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल को भी और टूरिज्म को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मायना दोनों में करें। क्यों तो होटल अभी तक जो सरकार सोच रही है, जो भी लोग सोच रहे हैं वो लग्जरी है, बट होटल अब लग्जरी नहीं, अब नेसेसिटी बन जा रही है। क्यों तो इतना स्ट्रेस है पब्लिक के अंदर, तो उसे भी कहीं भी जो है ना उसको रिलीज करने के लिए होटल चाहिए, टूरिज्म चाहिए, तो दैट शुड बी कम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, तो क्या टूरिज्म को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा? क्या होटल रेस्टोरेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाया जाएगा? ये भी एक विश लिस्ट है। लेकिन जैसे आपने कहा स्ट्रेस की बात, और आपका स्टार्टअप मेंटल हेल्थ में है, तो हेल्थ में आज हम क्या फोकस देख सकते हैं, खासतौर पर मानसिक सेहत पर? अभी जो गवर्नमेंट का जो बजट है अराउंड 1000 करोड़ के करीब का है मेंटल हेल्थ में, और कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बेसिकली इकोनॉमी में जो ऑलरेडी जो इकोनॉमी में 1.03 ट्रिलियन के लॉसेस कर रहा है, एफिशिएंसी लॉसेस, $1 अगर हम स्टार्टअप्स में स्पेंड करते हैं, $4 का रिटर्न्स मिलता है। अच्छा। हाँ जी, तो ये WHO के फिगर्स है, मेरे अपने नहीं है। तो स्टार्टअप्स और मेंटल हेल्थ जो है वो एक इकॉनमी और नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, और गवर्नमेंट को इसमें फोकस बनाना चाहिए। और स्टार्टअप में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मास मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम पूरे इंडिया में जो 1.4 बिलियन पीपल हैं, उनको कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे कैसे उनको हम एसेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोग्राम्स उसके साथ हम गवर्नमेंट चला सकती हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एक स्ट्रैटेजी के रूप में लेके आनी है। जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्टार्टअप की संभावनाएं ज़्यादा हैं 2024 और अगले 2-4 सालों में? मेरा ख्याल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये एरियाज़ जो हैं ये अपकमिंग एरियाज़ है। अगले 5 से 10 साल में इसमें आप बहुत सारा मूवमेंट देखेंगे। पर इसके लिए फिर क्या ये महंगी आती है टेक्नोलॉजी? इसके लिए एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है? नहीं, गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बना रखे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पे काम कर रही है, और इसको अगर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो स्टार्टअप्स के जो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं उनके साथ काम करें तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स बना रखी है। अब ये पॉइंट है कि इस समय पे ये स्कीम्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और उनको इंसेंटिव देने हैं ताकि स्टार्टअप्स और ज़्यादा स्टार्टअप्स आए, कंपटीशन बढ़े और बेटर प्रोडक्ट्स लेके आए स्टार्टअप्स। जी, पिछले साल अगर हम बात करें 1 फरवरी 2023 की, तो जब बजट आता है तो बहुत से प्रीफिक्स लगते हैं कि ये बैलेंस बजट है, ग्रोथ बजट है। तो पिछले साल के बजट को ग्रोथ बजट कहा गया क्योंकि शंकर जी 45 लाख करोड़ का जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें 10 लाख करोड़ कैपेक्स, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। तो क्या जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में देश का बजट ज़्यादा फोकस करता है तो उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं? बिल्कुल, अगर जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे ना तो हमारा जो ग्रोथ कंट्री नहीं करेगा। क्यों तो पहले भी क्या होता, जब रिसेशन होता तो राजा क्या करते थे, तालाब खुदवा दिया तो बहुत सारे वहाँ पर वर्कर चला गया, फिर वहाँ पर एक कॉमर्शियल सेटअप बन गया। तो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो वो कैपेक्स आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही जो है जो हमारी ग्रोथ को ना बहुत आगे तक लेके जाएगी। जी। और इसके लिए चाहे गवर्नमेंट को अपनी रिसोर्स तो है ही है, जो हमारे टैक्सेशन तो है ही है। अगर गवर्नमेंट लोन भी ले रही है तो कोई बात नहीं, लोन अगर हम ले रहे हैं और उसको रीपे की कर रहे हैं तो हमारे वो बैलेंस है। जैसे लोग कार ले रहा है तो ये लोन लेके, अगर पहले इससे पहले इतने कार नहीं बिकते थे, लोग इतना अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन जब से कंज्यूमर के लिए लोन की व्यवस्था हुई तो खूब डेवलप किया, लोग इंडिविजुअल मकान भी बना रहे हैं, घर गाड़ी भी ले रहे हैं। उसी तरह से सरकार अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये ग्रोथ को लेके जाएगी। ग्रोथ के लिए कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। अब अर्बन क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कंजम्पशन होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंजम्पशन हो। तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल कंजम्पशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ रहा है? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पे बिंदु रखा है कि जो अगर आप एक सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसको आप बोलते हैं उसका अगर कंपोनेंट देखा जाए तो उसमें आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया, कंजम्पशन, उपभोक्ता। क्योंकि देखिए क्या है, इकोनॉमी एक साइकिल की तरह चलती है। अगर कोई भी एक चीज़ बनती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो
उसके साथ 10 और इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो आपने बड़ा सही कहा कि ये जो डिवाइड है, ये जो आप जो कह रहे हैं कि रूरल एरिया में या ग्रामीण एरिया में कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है, तो ग्रामीण एरिया में कंजम्पशन इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। हालांकि ये बात सत्य है कि ग्रामीण व्यवस्था में अभी भी काफ़ी हद तक मानसून पर हमारा प्रभाव है और उसकी वजह से ही एक पूरा साइकिल चलता है। तो ऐसा लगता है प्राइमरीली जो फोकस गवर्नमेंट का है वो बहुत ही बैलेंस फोकस, एक संतुलित सा बैलेंस चल रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी सिर्फ मानसून पे ना रह के बाकी सेक्टर्स पे भी किया जाए, ऐसा लगता है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय गवर्नमेंट लेने वाली है जिससे कि एक सस्टेनेबल कंजम्पशन रूरल एरिया में भी बढ़ेगा, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने देखा है और इस बजट से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे कि बढ़े। और प्रोफेसर साहब, गुरुवार की सुबह देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है और बूंदाबांदी तो लगी हुई है। तो मॉनसून पर हम लोग निर्भर हैं, हम कृषि प्रधान देश है संजय जी। तो अन्नदाता के लिए अगर हम बात करें, फार्मर्स के लिए, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर स्पेस में भी स्टार्टअप्स की बहुत संभावनाएं हैं, भले वो सीड्स की बात हो, फर्टिलाइजर्स की बात हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बात हो, टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र से जोड़ने की बात हो? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स दस्तक दे रहे हैं और ये बेसिकली IoT और ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उनकी मैपिंग करते हैं, आप उनके पिक्चर्स लेते हैं, उससे बेसिकली जो प्लांट्स की आप उनकी जो स्वास्थ्य है वो बताते हैं और उसमें उसको आप सीड्स की डिस्पर्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नई क्रांति आ रही है और जो कि IoT, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और वेरियस अदर टेक्नोलॉजी, जैसे सॉइल आप माप रहे हैं कंटिन्यूसली, आप सॉइल कैसे उसकी गुणवत्ता कैसे नाप सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि बजट में FPO पर भी काफ़ी फोकस किया गया, यानी फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर शंकर जी छोटे छोटे किसान हैं, अगर वो एक समूह बना लें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो फिर उनके लिए आसान होता है मार्केटिंग करना? बिल्कुल आसान है। उसमें सरकार टैक्सेशन की रिबेट भी अलग से दे रही है। अच्छा। हाँ, और ये कंपनी बनाना बहुत आसान है, FPO बनाना बहुत आसान है। 10 लोग होना चाहिए या 2 प्रोड्यूसर्स होना चाहिए कंपनी। तीसरी बात है कि इसके अंदर सरकार इसे प्रायोरिटी सेक्टर में मान रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत जो रियायत हो सकती है वो दे रही है, ताकि जो किसान जो भी बना रहा है प्रोडक्ट वो मार्केट तक इजीली पहुंचे। तो जब आप कहते हैं कि ये सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कृषि क्षेत्र, इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब बैंक के पास वो जाएंगे ऋण लेने तो उनको सस्ती दरों पे मिलेगा फाइनेंस? सस्ती दरों पे मिलेगा और आसानी से मिलेगा, पेपर वर्क्स काफ़ी कम होंगे इसके अंदर। जी, हेल्थ की बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी सेहत। तो खुदा न खास्ता अगर हम बीमार पड़ जाएं तो दवाई भी लेनी पड़ती है। अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पे बल दिया गया, तो क्या उम्मीद करें कि जन औषधि सेंटर्स और बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी तक जो जन औषधि केंद्र हैं वो तकरीबन 10,000 हैं। सरकार की ये उम्मीद है कि इस बार इसे 25,000 के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि वहाँ पर 50 से लेकर 90% दवाई सस्ती मिलती है बाकी जगहों से। जी, तो सरकार जरूर इस पे काम करेगी। जी, और 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि 10,000 से अब ये 25,000 का टारगेट रहेगा। लेकिन जैसे आपने GDP वर्ड यूज़ किया, प्रोफेसर साहब आप तो अर्थशास्त्री हैं, GDP कैसे कैलकुलेट होता है? और भारत सर्विसेज में तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की तो कैपिटल बन गई है, लेकिन वो कहते हैं जी अगर $5 ट्रिलियन बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी बल देना होगा। क्या हमारे GDP में हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों में बल दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि GDP है क्या। GDP का मतलब ये हुआ कि देश की जहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, मतलब किसी भी देश में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे या तो आप उसको वस्तुएं मान लीजिए या सेवाएं मान लीजिए, उन सब का जो मैं अगर जोड़ दूं, जैसे A ने इतना प्रोड्यूस किया, B ने इतना प्रोड्यूस किया, मान लिया जाए कि रिलायंस जियो ने इतना बिजनेस कंट्री में किया, सैमसंग ने इतना किया, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हम सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था में कितना एग्रीगेट कर दिया, ये GDP है। और अभी कितना है तकरीबन ये GDP अभी हम क्लोज टू 3 ट्रिलियन मान रहे हैं और हमारा 5 ट्रिलियन का है। तो आपने कहा कि जैसे 5 ट्रिलियन बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड में आना पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग साइड आना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि
और अभी जो चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं, जो आप रिव्यू को जो आपने लिखा है उसमें एक चैलेंज ये जरूर लिखा हुआ है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन अब आ रहा है ना, और जियोपॉलिटिकल कंडीशन अब जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है रशिया यूक्रेन वार के बाद। अभी आपने कहा हमास वॉर, इसके बाद से ना अब एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म वापस से जो है हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश, पहले ही प्राथमिकता अपनी दे रहा है। भारत के संदर्भ में अच्छी बात यह है कि 140 करोड़ की आबादी, तो हमारी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत है, बहुत अच्छा है। और वो कंजम्पशन अगर अच्छा है तो हमारा जीडीपी और रिजिलियंस, एक रिजिलियंस वर्ड होता है कि जब इकोनॉमी कितनी रिजिलियंट है, मतलब बाहर से कितने ही आक्रमण हो, बाहर से कितने ही, जैसे कोविड एक आया, कोविड के दौरान आपने देखा कि विश्व की बाकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और खराब हो गई, परेशान हुई, पर भारत ने वो बाउंस बैक कर दी। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत मैं जो अर्थशास्त्री मानता हूँ कि 7% का जो हम रिजिलियंट इकोनॉमी है उसमें अब जो ये गवर्नमेंट का ऑफ लेट मेक इन इंडिया कैंपेन है जिसका अब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अब बहुत सारे सेक्टर को ये कहा गया है कि आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। ये पॉलिसी, चूंकि ये परिवर्तन एकदम ओवरनाइट नहीं आ जाते, एकदम से नहीं आ जाते, तो इसमें जो है अब गवर्नमेंट इसमें वोकल फॉर लोकल की बात कर रही है, यहीं पे प्रोडक्शन की बात कर रही है, ये करना पड़ेगा, इसके बिना हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट कई स्कीम्स लाई है, जैसे कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और लगातार बजट्स में MSME जो लघु उद्योग हैं हमारे, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे जहन में कभी कभी संजय जी सिर्फ पुल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आते हैं, लेकिन मौजूदा दौर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो UPI देखिए कैसे बड़ी क्रांति हुई, उसी क्रम में अब ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। आपको लगता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मदद मिलेगी? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे आपने ONDC की बात की, जैसे आपने UPI की बात की, एक जैसे भाषिणी करके है जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर है, काफ़ी काम कर रहा है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके बेसिस पे आपकी सेकेंडरी और टर्शरी जो स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप होंगी और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो रिटेल्स में जा रही है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बजट से जो हमारी सबकी विश लिस्ट है ये पूरी हो, और सारी विश लिस्ट तो पूरी करना बहुत मुश्किल है। देखना दिलचस्प रहेगा कि वित्त मंत्री जी अब जब बजट स्पीच रखेंगी तो आखिरकार कौन से प्रावधान पे बल देती है। लेकिन कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए प्रोफेसर साहब आपका, शंकर जी आपका, संजय जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो आइए सीधा चलते हैं लोकसभा, जहां पर अब से कुछ ही पलों में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी प्रस्तुत करेंगी आंतरिक बजट, इंटरिम बजट। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas,
as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing,
get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri,
are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years
as complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all,
help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally, orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of
cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi.
83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs.
40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers
based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees
respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled
and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House
the exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes the goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।